Hello, all wonderful learners. Today, I welcome you all on Dr. Rina's Physiology. But आज हम लोग सीखेंगे how to write a skillful paper for better scoring. So हम सबको पता है कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है बट आपको लिखना कैसे है, that is equally important. And I have seen that many of you can study well, but when it comes to writing in the paper, you miss out. So Dr. Rina's Physiology, Conceptual Integrated, and my Telegram group, that is Physiology Synapse to Success, jahan pe you'll be getting the notes for what I teach. Now, let's look on to the points or the important things before your exams. The strategy which we have in our mind, क्या strategy होती है हमारी? Last night study. Many people do this. Last night study. Please do not do the last night study. Remember, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है REM, NREM, sleep. And sleep is very important to recover your body for the next day. So अगर आप एग्जाम के पहले वाले रात सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, आई गारंटी यू कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा. एंड एग्जाम में जो याद आ सकता था, जो आप लिख सकते थे, वो भी आप नहीं लिख पाओगे. So you are never going to achieve if you just try to, avoid the sleep and only study. Never do that. Whatever you are writing is not the work of last night. It is the work of the last so many nights. इतनी सारी रातें जो हम कम सोते हैं, उसका नतीजा होता है हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन. एग्जाम से एक दिन पहले you are supposed to take a very restful sleep so that you are able to consolidate whatever you have learned and write it. Second important thing, as you enter the examination hall, always have a peaceful mind. I have seen that exam के पहले you do lots of discussion. उसका आंसर, इसका आंसर, कुछ भी मत करो. जितना आपका माइंड पीसफुल रहेगा, उतना ही आप रिकलेक्ट कर पाओगे और लिख पाओगे. सो बी हैव a very calm and a peaceful mind before you come, or at the moment you come to your exam hall. The commonest mistake is coming late. Very wrong. Be in the examination hall 10 to 15 minutes prior. आपको पता है आपको मोबाइल बाहर रखना है, बैग बाहर रखना है, वो सब आप करेंगे. आपका बॉक्स, कंपास बॉक्स, आपका बॉटल आपके पास होगा. फिर एग्जाम में आते हो, मैम मोबाइल भूल गया, right? I have the mobile with me. Then you get scolding. The moment you get scolding, your mind is irritated. Remember, all the neuronal circuits are destroyed and disturbed. Please, प्लानिंग से 15 मिनट्स पहले एग्जाम के शांति से अंदर आओ. सो हैव अ पीसफुल माइंड बिफोर राइटिंग द पेपर. हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है धर 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 लिखना स्टार्ट करते हैं. नो, ऑलवेज गो थ्रू द चेक और चेक द क्वेश्चन पेपर. देखो पूरा क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चंस है या नहीं, गलती से कोई ऐसा पेपर तो नहीं जिसमें कोई क्वेश्चन का प्रिंट नहीं है, बराबर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है. सो बिफोर राइटिंग, जस्ट गिव अ मिनट टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर. एक बार तो देखो यार क्वेश्चन पेपर ठीक है या नहीं, सारे क्वेश्चंस है या नहीं, आर दे अरेंज्ड. स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड देन थिंक ऑफ व्हाट टू राइट. Now, when physiology is concerned, rather कोई भी subject, I always advise my बच्चas to use the flow charts. Even cardiac cycle भी flow charts में. अभी आपको pathways आएंगे flow charts में, right? कुछ भी आता है, just try to manage flow charts. Try to draw as much as diagrams possible. Label in the diagrams and just use the flow charts. जो चीज को आपने फ्लो चार्ट में डाल दिया है, उसको दोबारा से पैराग्राफ बना बनाकर नहीं लिखेंगे. जब आप फ्लो चार्ट्स में लिखते हैं, मुझे दिख रहा है कि you have known the answer nicely and therefore you are able to nicely put the answer in the form of flow charts. So use flow charts, diagrams, label them, and वही का वही you are finished up. Now, again, a common mistake is don't leave any question unanswered. Do not keep devoting time to solve any one question.
This occurs when you do not read the paper. Once you read the paper, you come to know कि यार मुझे 10 BAQ करने हैं, 6 to 7 SAQ करने हैं और 2 LAQ करने हैं, राइट? सो मेरा ये सब कुछ वाइंड अप होना चाहिए इन द गिवन पीरियड। BAQ में कितना लिखना है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, सो 1 2 3 4 पॉइंट्स। अगर आपको आता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरा एक पेज का BAQ लिखेंगे, बिकॉज द मैक्सिमम मार्क अलॉटेड इज ओनली 2। मुझे कितने एसक्यू सॉल्व करने हैं, 6 या 7? टिक मार्क ऑन द क्वेश्चन पेपर कि ये सारे मैंने मार्क कर दिए हैं। When you don't manage your time, either you leave one of the question, या जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है 2 मार्क की, उसमें एक एक पेज का लिखोगे, और जहां पर लिखना है और आता भी है उसके लिए टाइम नहीं बचता। यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। सो मैनेज द पेपर वेरी वेल। और उसके लिए जरूरी है पेपर को पूरा आप पढ़ लेंगे कि दिस इज द पेपर, दिस आर द क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व। बिकॉज गलती से अगर कोई एक क्वेश्चन छूट जाता है, वहीं आपके 2 मार्क चले गए, ऐसे क्यों छूट गया, 6 मार्क चले गए, है ना? सो ऐसे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना, अगर आप क्वेश्चन लिख कर ही नहीं आए हो। सो ना ही आपको क्वेश्चन को छोड़ना है और ना ही आपको ओवर डूइंग करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है ज्यादा, उसमें उतना ही लिखना है जितना उसकी नंबर वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आता है तो बहुत सारा लिखना है ना। आपकी राइटिंग कैसे होनी चाहिए, स्पीड कैसे होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, बोल्ड एंड अंडरलाइन। Now suppose there is a question, myasthenia gravis. Okay, underline the topic, write whatever is the content. Now it is an autoimmune disease, so autoimmune disease को underline कर दो। There are antibodies against nicotinic receptors, underline कर दो। so एक पैराग्राफ में अगर important points को आपने underline कर दिया है या bold कर दिया है, उससे एग्जामिनर को दिखता है कि यार ये एकदम बराबर है, he or she has covered, so it's going to be गुड नंबरिंग एज एन इवेलुएटर, बिकॉज आई इवेलुएट द पेपर्स। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा लिखने से, क्लीन लिखने से यू गेट गुड मार्क्स। मेनी ऑफ यू कीप ऑन राइटिंग एनीथिंग लाइक दिस एंड यू थिंक कि ऐसा गंदा राइटिंग लिख दिया, 5-6 पेजेस एक आंसर को दे दिए, एंड यू आर ट्राइंग टू फूल द एग्जामिनर। नो, यू आर फूल, वी आर नॉट फूल। हमें पता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए तुमने ऐसा लिखा हुआ है। कम लिखो, अच्छा लिखो, स्पीड मैनेज करो। इवन इफ यू आर राइटिंग इन स्पीड, राइटिंग शुड बी रीडेबल। I should be able to read what you have written. Whatever are the highlighting points, mark a bullet, bold it, right? Make a box. ये important है, so that it is a reflection that you are confident at your knowledge. Correct reading and interpretation of the question. हमें हमेशा घाई होती है आंसर लिखने की, राइट? बट कभी भी सोचो कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, इंटरप्रीट नहीं करोगे, गलत हो सकता है। दिस इज वेरी कॉमन विथ MCQs। यू नो, सपोज आई से ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट आपने रीड नहीं किया, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, राइट? देर इज अ क्वेश्चन वेयर देर इज पॉलीडिप्सिया, there is polyuria, there is polyphagia. So ये 3 पॉइंट्स रीड किए, डायबिटीज, ये पॉइंट पॉलीफेजिया रीड करना नहीं है, या रीड करना भूल गए, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कर दिया, तो ये डायबिटीज मलाइटिस से डायबिटीज इंसिपिडिस बन जाएगा। Never be in a rush and rush to just write the answer. Never do like that. कभी भी ऐसा नहीं करना आपको। It is very important to understand the question. बचपन से जब आप स्कूल में भी जाते थे ना, आई थिंक सबके मम्मी बोलते होंगे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, समझो। एंड अभी भी मैं आपको यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसको समझो, उसमें क्या पूछा हुआ है। Many of the times I have seen that what you write is not at all what is asked. वो पूछा ही नहीं रहता जो आप अपने मन से लिख के आते हो, क्योंकि आपने इंटरप्रीट ही गलत किया हुआ है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, द पेपर वाज दैट यू हैड टू राइट अबाउट ECG, and the paper was also telling you to write about the normal conduction taking place through the heart. So ये conduction वाला जो
पॉइंट था जिसमें यू आर एक्सपेक्टेड एसए नोड, एवी नोड, डिले, बंडल ऑफ ब्रांचेस, ये स्किप आउट हो गया क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ईसीजी. Why did not you read and understand that the conduction is also asked to you? So please interpret and read. If there is any doubt, ask your teacher. Nobody will tell you that I am not going to tell you what is asked in the question. Ask. Now, this is the key point, that your time should be well managed. This is the key point, that the time should be well managed. 2-2.5 घंटे का पेपर है, आधा घंटा एमसीक्यू, सो 3 घंटे का पेपर है. एमसीक्यू के लिए इट इज फिक्स टाइम. Your time should be managed so perfectly that towards the end of the time, at least I am saying, you must have 10 minutes in spare to check the paper. 10 minutes in spare to check the paper. कभी कभी we miss out, we don't tie, we don't write our roll number, we don't write the subject, we don't write the date because we are always in the hurry to write and write. वही होता है प्रॉपर अक्यूरेट टाइम मैनेजर, जिसके पेपर के एंड में 10 मिनट बचे. एंड डोंट टेल मी दैट द पेपर इज वेरी लेंथी. पेपर इज नॉट लेंथी. हूएवर इज सेटिंग विल कीप इन टू माइंड कि ये पूरा पेपर इसका इतने इतने टाइम में खत्म होना चाहिए. जब पेपर सेट करने वाला ऐसा सोच रहा है तो लिखने वाले का भी काम क्या है, आई एम गोइंग टू राइट इन द वे दैट 10 minutes आर विद मी सो दैट आई कैन चेक माई पेपर, दैट नथिंग इज लेफ्ट, right? And I've put my roll number correctly. Now, once, one common thing, this is the commonest thing we do. उसने क्या लिखा, उससे मैं पूछ लेता हूँ. So last I have seen that 30 minutes के MCQ में 25 minutes I don't know what do you do, and the remaining 5 minutes में you keep on solving anything because you are always thinking that your padosi knows better than you. No, all of you have same brain. राइट, सबको उतना ही आता है, बट यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ. एंड वेन यू रिलाई ऑन अदर्स, वॉट यू आर मियरली डूइंग, आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेस्टेज ऑफ टाइम. वही टाइम आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एनालाइज करो तो बेटर होगा, रादर देन ये सोचो कि यार ये बता देगा मेरे को, हो सकता है उसका भी गलत हो. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने करेक्ट मार्क किया है और आपके फ्रेंड ने आपको बताया और आपका आंसर गलत हो गया. सो आपको जितना भी आता है, रिलाई ऑन योर सेल्फ, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, राइट? This can be misguiding and sometimes your own correct answer may be marked wrong, and obviously it is a, I mean, as a student it is a crime to cheat. Now, this is very, very important that avoid post examination discussion. पेपर 1 होना है, पेपर 2 होना है, भले इट इज फिजियोलॉजी, इट इज बायोकेमिस्ट्री और वट एवर. सो वंस द पेपर इज डन, इट इज गॉन. यू कैन नॉट चेंज. आप चेंज कर सकते हैं, कैन यू गो इनसाइड एंड फटाफट चेंज करो? नो, दिस विल ओनली गिव यू स्ट्रेस. कहीं ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, उसने इसका आंसर ये लिख दिया पर मैंने तो ये नहीं लिखा. सो आई ऑलवेज टेल यू दैट पोस्ट एग्जामिनेशन अपना रिव्यू देना, लेना, डिस्कशन करना इज ऑफ नो सेंस. कभी कभी ऐसे होता है कि आपने सही लिखा होता है, बट जब आप बाजू वाले का आंसर सुनते हो ना और उसका कॉन्फिडेंस देखते हो तो आपको लगता है कि आपका एग्जाम बिगड़ गया है, एंड व्हाट विल हैपन कि आपका नेक्स्ट डे का एग्जाम खराब हो जाएगा. सो नेवर गो इनटू पोस्ट एग्जामिनेशन डिस्कशन. जस्ट आज का एग्जाम हुआ, गॉड आई हैव गिवन माय एग्जाम, जो मेरे से हो सकता था मैंने बेस्ट किया, क्लोज द बुक, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट पेपर. अवॉइड peer discussions. So let's summarize. Read the instructions. Read the instructions which is given up in bold, which you never read because you are always in a hasty to write. Read the questions carefully. Analyze the question. Interpret the question. Plan your time. Check the marks on each question because उससे आपको पता चलेगा कि 2 मार्क में कितना लिखना है, 5 मार्क में कितना लिखना है, 10 मार्क में कितना लिखना है. प्लान द आंसर बिफोर राइटिंग. इफ इट इज एन LAQ, आपको याद होना चाहिए डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, डायग्राम है, ये सारे पॉइंट्स मेरे कवर होने चाहिए. सो LAQ में, स्पेशली LAQ एंड 5 मार्क SAQ में, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Do the correct numbering. For God's sake, do the correct numbering. क्वेश्चन 2 का ए वहां रहेगा, क्वेश्चन 2 का बी 10 पेज पीछे रहेगा. How will the teacher come to know? She may be misguided. So even if you are writing one question here in east and the other question in north, numbering correct karo. Question 2 A B C and so on. Question 3, question 4, numbering very clearly. Nothing is going to go if you waste 5 seconds on writing the question paper ka exact number. Wherever necessary, give examples, draw flow charts and diagrams. Suppose there is a question, facilitated diffusion, it is a 2 marks BAQ. The examiner has not told give example. I will give example. This is facilitated diffusion, example, glute. Right? Now, use the time available, spare time at the end to recheck the paper to ensure that your paper is complete. Now, towards the end, always remember that we are all, studying, and obviously we are clearing. There is no magic happening. But there are some people who really are magic to us. Our prayers are magical to us. Whatever prayers we do, because the prayers actually help us in passing through the exams. I mean, not how to write paper, but the strength which God provides us so that we can use our brain correctly, and our mothers are there. So, mummy ka magic is always with us. She keeps on blessing us. Rely on that. और कभी कभी आप देखोगे ना, जो मेरिकल हो जाता है, अरे यार आप लिख कर आ गए, यू थिंक कि मेरे को नहीं आया फिर भी हमें पास हो गया. That is the miracle of the mother. That is the miracle of the mother. So rely on your studies, but believe. What you have to believe? You have to believe that there is something which is called as the magical prayer of my mother, and the blessings and the prayer that Almighty gives me, so that I have that strength to write, to think, to keep absolutely correct, focused mind, presence of mind. So, this presence of mind is going to be most helpful for me to write, because there are going to be certain questions which are never read by you. At that time, these are the magics which will help you, right? So towards the end, all the bachas hearing out here, I wish you a very, very, very best of luck for your prelims, for your university exams, and for all the exams you come across in your life. So if there's any doubt, please put a comment. If you liked, put a like, share, and thank you so much, and best wishes to you.